Yes, sir, I can see the screen. राइट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं वे वी लेफ्ट ऑफ फ्रॉम लास्ट क्लास एंड दैट वाज वी वर ऑन द टॉपिक ऑफ द इश्यूज विद आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो कि इंडिविजुअल्स करते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन का दूसरा नाम क्या है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। एज इन इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व होती है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ ब्रीड करेंगे। सो यू आर सेलेक्टिंग द ऑर्गेनिजम्स व्हिच वुड ब्रीड और मेट विद ईच अदर। अच्छा, पिछली क्लास में जिस द आखिर में आके द क्लास गॉट इट एंडेड बिकॉज आई थिंक योर लैपटॉप गॉट डिस्चार्ज्ड। Yeah, it did. Yeah, so but we were on the topic of the issues with selectively breeding cows. Again, why are we specifically looking at cows? Yeah, just like in the previous example, why were we looking at maize plants? Because these are the two examples that are in your syllabus, and we're going to do the examples and understand the concept according to these two examples. So we talked about maize plants. Today we're going to talk about what are the issues कि क्या problems आती हैं when we selectively breed cows. सबसे पहले तो ये समझते हैं कि cows में ही क्यों specifically हमें artificial selection करनी होती है. It is because as in why do farmers selectively breed cows? So that जो milk की yield है वो improve हो सके. एंड हमने पिछली क्लास में भी देखा था, इट्स द फीमेल विच इज द काउ जो कि मिल्क देती है। एज इन अगर मिल्क की यील्ड को इम्प्रूव करना है तो ये एक फीमेल डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हमें इम्प्रूव करना है। और वो इम्प्रूव कैसे होगा? आर्टिफिशियल सिलेक्शन से। सो फार्मर्स selectively breed cows to improve their milk yield, and this is a desirable characteristic. अब इफ यू कंफ्यूज्ड ऑन आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से मिल्क यील्ड कैसे इंप्रूव होती है, वो ऐसे कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से those organisms which have desirable characteristics are bred together. When they are bred together, which set of alleles will be passed downwards? Advantageous or non-advantageous? The advantages. Advantageous, बिल्कुल। When organisms with desirable characteristics, मतलब जो characteristics हम देखना चाहते हैं offsprings में, we look for those same characteristics के इस वक्त किन किन organisms में वो characteristics हैं which we are looking for from the F2 generation, उन organisms को हम लेते हैं and उनको फिर selectively breed करते हैं. So organism with desirable characteristics characteristics are bred together, which means के advantageous alleles will be passed downwards. अच्छा, हमने एक और चीज देखी थी और वो ये थी कि मिल्क की yield अगर improve करनी है तो this is a female characteristic. Now this is really important. क्यों? When we are breeding the organisms together, it has to be a female cow. And does a male cow exist? Is there something as a male cow? या cow सिर्फ females ही होती हैं? Could you repeat your question? सो जो काउस होती हैं, आर दे बोथ मेल एंड फीमेल या आर देयर ओनली फीमेल काउस दैट कैन एग्जिस्ट? I think there are only female cows and for the males, they're bulls, I think. The males, they are bulls, बिल्कुल सही। तो when we talk about organisms with desirable characteristics are bred together, we obviously breed the female which is the cow जिसकी high milk की yield है। ये जो high milk की yield है, this is a desirable characteristic. But there's a problem. When we breed it with the male parent यहाँ पे एक bull होगा। बुल से कभी भी मिल्क हमें नहीं मिलता। A bull does not give us milk. Therefore, we cannot look for a desirable characteristic in the bull, can we? No. We can't. हमारी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? सबसे पहले तो ये क्लियर करते हैं, मिल्क की यील्ड को बढ़ाने का। जब कोई ऑर्गेनिज्म मिल्क ही नहीं देता तो फिर मिल्क की यील्ड देने वाली कैरेक्टरिस्टिक उस ऑर्गेनिज्म में होती नहीं है, which is an example of a male bull. A male bull does not give milk. Therefore, मिल्क यील्ड ज्यादा करने वाली कैरेक्टरिस्टिक मेल पेरेंट में तो नहीं होगी।
But then what should we do? Because we need to have organisms which have desirable characteristics. So even though the high milk yield wali characteristic is not in the male bull, we can take ऐसा male bull which has come from a mother जिसकी एक high milk yield है. Because उस male bull की mother भी तो एक cow ही होगी, right? Yeah. So we take ऐसा specific male bull जिसकी mother has a high milk yield as well. अब इससे फर्क क्या पड़ता है? How does that help us? The thing is, and this is a question which most students have कि let's suppose चलो मान लिया we take a male bull which comes from a mother जिसकी high milk yield है. How does that affect the male bull? How is that different compared to a male bull which has come from a mother जिसकी high milk yield नहीं है? The thing is, वो जो allele है, वो जो characteristic है, the advantageous allele, that is present in the male bull which we are looking for, but it is not expressed in the male bull. That's the only thing you need to understand कि ये जो specific male bull हमने choose किया है, इसमें वो advantageous allele मौजूद है which we are looking for. But the only thing is कि ये उस organism में express नहीं हो रहा. क्यों express नहीं हो रहा? क्योंकि वो एक bull है. That's it. So यहाँ पे I'm just gonna write down. We breed a female cow. अब यहाँ पे तो हम वो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं, राइट? एज इन द phenotypic वेरिएशन कि you breed a female cow which gives a high milk yield, and this is bred with a male bull that comes from a mother which has a high milk yield. तो मदर की हाई मिल्क यील्ड थी, मदर के अंदर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक थी, मदर के अंदर एडवांटेजेस एलील इस मेल बुल में आ गया. ये अलग बात है कि मेल बुल में वो कैरेक्टरिस्टिक या वो एलील एक्सप्रेस नहीं हो रहा बट इट्स स्टिल देयर. इसका मतलब कि जब हम इसको अब ब्रीड करवाएंगे, यहां से भी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पास होंगी डाउनवर्ड्स फ्रॉम द बुल. Yeah. इट विल. बिल्कुल सही. सो मेल बुल दैट कम्स फ्रॉम a mother that also has a high milk yield. So this means that the advantageous alleles थोड़ा सा ये मुश्किल होता है समझना क्योंकि मेल बुल कैरेक्टरिस्टिक है भी और कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस भी नहीं हो रही है, सॉरी एलील है भी और एलील एक्सप्रेस भी नहीं हो रही है. दैट्स अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट वंस यू गेट दैट देन इट्स इजी कि यहाँ पे द एडवांटेजेस एलील्स आर प्रेजेंट बट नॉट एक्सप्रेस्ड एंड दे आर पास्ड डाउनवर्ड्स. और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि मिल्क यील्ड जो है वो पॉजिटिवली अफेक्ट होती है, एज इन वो बढ़ जाती है, विच इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर. So they are passed downwards, positively affecting the milky. यहां तक तो बिल्कुल सही है. Everything is all good until here. लेकिन I want you to look at the name of the topic जो हमने लिखा था. What was the name of the topic? Issues with selectively breeding cows. बिल्कुल. It was an issue with artificial selection cows के रिलेशन में, cows के मामले में. इस पूरे प्रोसेस में was there any issue? क्या कोई प्रॉब्लम आई? Anything? No. देयर वाज नो इशू. इट वाज अ सिंपल प्रोसेस जो कि हो रहा था, एंड वो सिंपल प्रोसेस के जरिए दो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको ब्रीड करवाया. F2 जनरेशन में द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट वी आर लुकिंग फॉर इज गोना बी हायर. देयर इज नो प्रॉब्लम. नाउ वी आर गोना राइट डाउन द प्रॉब्लम. मसला ये है, इवन दो हम अब प्रोड्यूस करेंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे काउस जिनकी हाई मिल्क यील्ड है, लेकिन जो काऊ ज्यादा दूध देती है, द काऊ which is giving us a higher milk yield has a bigger udder. So let me write this down first. Even though
we are producing this, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, this is the F2 generation. Even though we are producing cows with a high milk yield, the cows that produce more milk या जिनसे हमें ज्यादा दूध मिलता है have a higher, or you could say have a bigger udder. अब ये udder क्या चीज है? Let me write down the spelling first. Have a bigger udder. बेसिकली अगर काउस की बॉडी को देखा जाए तो उसकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर को या इस बॉडी के इस हिस्से को नाम दिया जाता है अडर. दिस इज द प्लेस जहां से दूध उस काउ में से रिलीज होता है. सो हैव यू एवर सीन अ अडर ऑफ अ काउ? Yeah. या सो जो काउज ज्यादा मिल्क की यील्ड प्रोड्यूस करती हैं उनमें जाहिर सी बात है अडर भी बड़ा होता है, बिकॉज अडर इज द प्लेस जहां पे दूध स्टोर होता है. सो इफ यू आर स्टोरिंग मोर अमाउंट ऑफ मिल्क, इट्स गोना बी अ बिगर अडर. लेकिन स्टिल, व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज कि जिन काउज में अडर की साइज बड़ी होती है, उन काउस को चलने में डिफिकल्टी होती है. सो बिगर अडर रिजल्ट्स इन डिफिकल्टी इन वॉकिंग. सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम जो कि एसोसिएटेड है विद मिल्क यील्ड. मिल्क यील्ड तो बढ़ रही है, लेकिन कोइंसिडेंस समथिंग एल्स, कि हमने एक कैरेक्टरिस्टिक को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर दिया कि बहुत ज्यादा मिल्क यील्ड हो रही है, बट द प्रॉब्लम इज इट्स अ बिगर अडर व्हिच रिजल्ट्स इन डिफिकल्टी इन वॉकिंग. And there is another problem if cows have a bigger udder, and that is that there is a greater chance of developing a condition called mastitis. So cows with a bigger udder have a higher chance of developing mastitis. Have you heard of the word mastitis? Have you learned this in school before? I know we haven't discussed the examples in much detail. Right. Acha. So mastitis is it not? It feels like a fancy word, but it's not something complex. This is simply udder infection. So the probability of developing udder infection basically depends on the size of the udder. मतलब कि अगर smaller udder होगा तो mastitis का चांस भी कम होगा. लेकिन अगर udder की साइज बड़ी होगी तो mastitis डेवलप होने का या udder infection डेवलप होने का चांस भी ज्यादा होगा. दैट्स ऑल फॉर आर्टिफिशियल सिलेक्शन या सिलेक्टिव ब्रीडिंग. हमने उसके प्रिंसिपल्स देख लिए शुरू में, फिर हमने वी लुक्ड एट दैट इन एन एग्जांपल मेज प्लांट्स में, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, आउट ब्रीडिंग, hybrid vigor, and then we looked at the issues with selectively breeding in the form of cows. Any confusion with artificial selection? No, it's clear. Okay. Now let's move on to the second topic after artificial selection, and that is genetic drift. अब लेट मी गो बैक टू दिस लिस्ट जो हमने पहले लिखी थी इवन बिफोर हमने नेचुरल सिलेक्शन किया था. सो राइट हियर हमने ये सारी लिस्ट लिखी थी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन कि क्या क्या कॉजेज होती हैं विच लीड टू अ चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी. एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज मतलब कि द इंटायर अमाउंट ऑफ एलील्स जो हमारे पास हैं फ्रॉम अ सीरीज ऑफ जनरेशंस टू द नेक्स्ट सीरीज ऑफ जनरेशन, एलील की क्वांटिटी, एक स्पेसिफिक एलील की क्वांटिटी चेंज होना, उसकी फ्रीक्वेंसी का चेंज होना. एंड जब एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होती थी तो कौन सा फिनोमेना होता था? What was this a synonym of? Evolution. एवोल्यूशन. बिल्कुल सही. एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज का मतलब कि एवोल्यूशन हो रही है. अब एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज कैसे होती थी? दैट डिपेंडेड ऑन फोर फैक्टर्स या फोर कॉजेस: नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट. हमने इन तीन की ऑलरेडी बात कर ली है. वी आर ओनली लेफ्ट विद जेनेटिक ड्रिफ्ट. इससे हमें क्या समझ आता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट, just like all of the other causes, is also one of the causes that leads to a change in the allele frequency. So let me write this down. It is one of the causes जो biologists ने ये समझी हैं that leads to a change
इन दी एलील फ्रीक्वेंसी, एंड एज यू सेड बिल्कुल सही कि एलील फ्रीक्वेंसी में जब चेंज आता है तो हम कहते हैं कि एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ। ओके, अब एक बड़ा जरूरी क्वेश्चन, एंड दिस कम्स इन रेगुलरली रेगुलरली P4 में आता है, एंड द क्वेश्चन इज डिफाइन जेनेटिक ड्रिफ्ट। इट्स a 2 mark question. Could you explain briefly genetic drift का मतलब क्या होता है, by what you understand? It's basically like when the changes in alleles, it happens due to chance, I think. बिल्कुल सही, correct. There is a random change in the allele frequency. Yeah, and Yeah. then there is a random change, and then basically the advantageous alleles are passed on, and then that's why Mhm. it leads to a increase in the allele frequency of the advantageous alleles, something like that. बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द पॉइंट्स वर करेक्ट कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब कि एलील फ्रीक्वेंसी चेंज तो हो रही है, लेकिन द यूनिक पॉइंट फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट इज, द यूनिक कंसेप्ट इज कि एलील फ्रीक्वेंसी चेंज जो हो रही है वो ड्यू टू चांस है, वो रैंडम चेंज हो रही है। सो करेक्ट, देयर इज अ रैंडम चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी। पर टेल मी दिस, अगर इन्वायरमेंट में कुछ ना हो, मतलब कि इन्वायरमेंट जो है, सराउंडिंग्स जो हैं, दे एंड कंडीशंस जो हैं, दे स्टे एज इट इज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट, तो क्या एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आ सकता है अगर इन्वायरमेंट भी सेम हो, कंडीशंस भी सेम हो, सब कुछ सेम हो? Yeah, like because of spontaneous mutations. स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, बिल्कुल सही पॉइंट है, करेक्ट। अच्छा, फॉर अ सेकंड लेट्स अज्यूम कि कोई भी म्यूटेशन नहीं होती, इन दैट केस No, then there can't be a change. there can't be a change. Mutation was a good point कि अगर conditions और environment same रहती है, mutation doesn't depend on the environment. Mutation तो random हो सकती है, spontaneous हो सकती है, radiation की वजह से हो सकती है, कुछ भी वजह से हो सकती है। लेकिन अगर environment में change आता है, that's natural selection. Environment में change आता है, we could also technically say कि artificial selection, कि human की intervention अब involved हो गई है। लेकिन हमने क्या condition set की थी? No change in the environment, no change in the condition, no change in the surroundings, and assuming no mutation, तो कोई एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आ सकता। दिस इज व्हाई वी से कि जब जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है रैंडम चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी, ये चेंज आया कैसे? दिस चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय टू वेज। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि environment needs to be the same, condition needs to be the same. That was a separate example. I was just trying to explain कि assuming कि अगर हम इन सब चीजों को सेम रखें, environment, condition, surroundings, तो फिर तो allele frequency में change ही नहीं आ सकता। Therefore, there needs to be a change in the environment if you need to have a change in the allele frequency. And the two ways in which genetic drift happens, number one, founder effect, and number two, bottleneck effect. अच्छा, these names may sound a bit weird, लेकिन as soon as we start to understand ये किस किस्म के effects हैं, how do they result in allele frequency changing, how do they take place in real life, तो फिर easy हो जाएगा समझना। Let's start with founder effect. So let's try to read this word again or read this phrase again. एक ऐसा effect है जो कि somewhat related है to founders. Whenever we, जैसे real life में, if you have a company, company का founder कौन होता है? Is he the first person to discover that company or open that company, or was he joined later in the company? He's basically the person who like joins, who opens the company, something like that. बिल्कुल, द पर्सन हु ओपन द कंपनी और द पर्सन हु हैज फाउंड द कंपनी, इसलिए उनको जो टाइटल, उनको जो खिताब मिलता है, दैट इज फाउंडर, कि इस बंदे ने या उस इंसान ने इस कंपनी को फाइंड किया है। उसी तरीके से इन जेनेटिक ड्रिफ्ट इट इज एन अफेक्ट बिकॉज ऑफ अ फाउंडर। इट मींस यू आर लुकिंग फॉर एन ऑर्गेनिज्म जिसने नया नया कोई प्रोसेस अभी शुरू किया है। जैसे कि कोई फाउंडर होता है, उसने नई नई कंपनी शुरू की होती है,
उसी तरीके से इन दिस एग्जांपल वी आर गोना बी लुकिंग फॉर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो will be the first ones to start a process. Now, what's this process? Founder effect usually happens when we separate, ये तब होता है founder effect when we separate a small population from a larger population randomly. So let's take an example इसको समझने के लिए कि एक small population larger population से randomly कैसे separate हो सकती है. Let's take an example. So let's say I have this island right here. Now it seems like a very weird island, लेकिन इस island के दो parts हैं. There is this bigger part of the island, and then there is smaller part of the island, and then there is this pathway जो कि इन bigger part और smaller part को connect करती है. अच्छा, अब इस पूरे आइलैंड पे जगह जगह पे स्कैटर्ड थे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स. इन सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक जीन था, एंड देयर वाज दिस जीन कॉल्ड जीन ए. This gene A was responsible for body color. So this gene A codes for body color. इस जीन के तीन एलील्स थे, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल एफ. Which type of phenomena is this? जहाँ पे दो एलील्स डोमिनेंट होते हैं and then when these two are joined together you have a new phenotype. Which type of phenomena is this? Codominance? कोडोमिनेंस, बिल्कुल. व्हेनेवर यू लुक एट एन एग्जांपल जहां पे जीन के अंदर एक रिसेसिव एलील तो है ही, लेकिन एक से ज्यादा डोमिनेंट एलील है, दैट इज सिंपल सिंपल कोडोमिनेंस. एंड एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही फिनोमेना है. इन दो कैपिटल लेटर्स में लिखे गए एलील्स के बीच में कोडोमिनेंस एग्जिस्ट करती है. एंड दिस स्मॉल एलील राइट हियर, दिस इज द रिसेसिव एलील. लेट्स लुक एट कि क्या क्या फिनोटाइप्स होंगे डिपेंडिंग ऑन कौन से जीनोटाइप्स होंगे. सो अगर कैपिटल बी हुआ या कैपिटल बी, इट्स गोना बी अ ब्लू कलर. क्यों? क्योंकि कैपिटल बी में दिस कैपिटल बी एलील इज द वन दैट इज एक्सप्रेस्ड द डोमिनेंट ट्रेट. एंड सेम केस यहाँ पे, क्योंकि दिस इज नॉर्मल जो हेटेरोजाइगस हम पढ़ते हैं, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट वन इज गेटिंग एक्सप्रेस्ड. So the dominant trait is blue. Now, let's say if it's capital C, yeah, capital C, small f, it's gonna be red. And if it is small f, it's gonna be black. Acha, what about the codominant trait? That is capital B and capital C, which is gonna be purple. Do all of the genotypes and the phenotypes make sense? Yeah, they do. Okay. Let's understand a word. We'll understand the definition of this word and then we'll move on with the example. जो word हमें समझना है, जो हम आगे जाके use करेंगे, is something called gene pool. अब gene pool क्या होता है? Gene pool simply is the summation or the sum of all of the genes and their alleles in a population of organisms. So हम क्या कर रहे हैं? हम सारे के सारे जीन्स को ले रहे हैं, उन जीन्स के अंदर सारे एलील्स को ले रहे हैं एंड उनको जॉइन करके together they are called the gene pool. So gene pool is the summation. So it's not just one gene. All of the genes जो सारे organisms में है उनका sum, हर gene जो जो alleles उनकी alternative forms होती हैं उनका भी sum, everything together makes the gene pool. So let me write this down here. Summation of all of the genes and its alleles in a population. तो इस वक्त जो हमारे पास जीन पूल है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, could you tell me the alleles in the gene pool right now? Capital B, Mhm. capital C, and small f. स्मॉल एफ, बिल्कुल सही. अच्छा, अब एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज यहाँ पे यू हैव मेनी ऑर्गेनिजम्स, राइट? सो व्हाट आर द कलर्स जो हमारे पास थे? वी हैड अ ब्लू कलर, अ रेड कलर, अ ब्लैक कलर एंड अ पर्पल कलर. सो यू हैव मेनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स. अब क्या होता है, सपोज कर लेते हैं दो ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि पहले इस बिगर पार्ट में थे इस आइलैंड के. दीज टू ऑर्गेनिजम्स की जीनोटाइप थी स्मॉल एफ, स्मॉल एफ. इसका मतलब उनका फिनोटाइप था ब्लैक.
So you had two organisms जो पहले यहाँ पे थे, and then these two organisms ने randomly decide किया कि अब हमें इस बड़े वाले part में नहीं रहना, we will shift to the smaller part for no particular reason. बस वो randomly move कर जाते हैं. And और पीछे in this bigger part, apart from these two organisms, बाकी सारे organisms अभी भी वैसे के वैसे हैं. So you have the capital C small f, which is the red, then capital B, capital B small f, which is blue, then capital B capital C, which is purple, and even some small f, which is black. सिर्फ क्या difference हुआ? दो organisms small f के यहाँ से यहाँ चले. अच्छा, अब हुआ यूं कि रैंडमली इन इस आइलैंड के ऊपर एक अर्थक्वेक आया, एक शिफ्ट आई टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर. एंड व्हाट दिस अर्थक्वेक डिड इज दैट इट सेपरेटेड द बिगर पार्ट ऑफ द आइलैंड फ्रॉम द स्मॉलर पार्ट. सो दिस इज द बिगर पार्ट, दिस इज द स्मॉलर पार्ट. And Pele, when this existed as a complete island, this is now broken apart into two islands. This is island number one, and this is island number two. क्या अब ये दो ऑर्गेनिज्म सेपरेट हो चुके हैं इन सारे कॉलोनी ऑफ ऑर्गेनिज्म से? Yeah, they're separated. Separated, that's question number one. Question number two, earthquake जो आया, could we have predicted the earthquake या could we have caused the earthquake, या क्या ये एक random process था? It was a random process. It was a random process. अच्छा, now I want you to look at the smaller island. कौन से organisms present हैं इस island पे? मतलब could you tell me the genotypes? The small f ones, the ones that are black. The ones that are black. And are there any other organisms which have any phenotypes other than black? No. So can we say कि अब ये जो दो organisms हैं जिनकी genotype small f है, these are the founders in this specific island? Yeah. अब होगा क्या कि नाउ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गो बैक टू दिस आइलैंड, राइट? क्योंकि अब अर्थक्वेक हो चुका है. अब ये दो आइलैंड्स सेपरेट हो चुके हैं. सो इफ आई कैन जस्ट ड्रॉ द सेपरेशन, this is island number one, and then this is island number two. Now, because there's a gap, अब ये दो island, ये sorry, the organisms cannot go back to their original place. अब क्या होगा? That they'll reside there. When they'll reside there, they'll breed together, they'll mate together, और उसकी वजह से बहुत सारे organisms produce होते जाएंगे. F1, F2, F3, F4, F5. What are the advantageous alleles? Yeah, forget advantages. What are the alleles that are passed downwards? Capital B, capital C, yes, small f. The small f. तो क्या अब स्मॉल एफ एलील की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी इस स्मॉलर पार्ट में? Yeah. So this was a random change in the allele frequency, which was brought about by something called the founder effect. तो founder effect हमें सिर्फ ये समझना है कि ये क्या है. This simply is कि कुछ organisms ऐसे थे which decided कि hold up, let's go somewhere else. They went somewhere else, and then they were the founders of this new place जहाँ पे they were the only ones. So they bred together, breeded together, mated together, जिसके result में the offsprings के अंदर वो एलील्स थे which was the small f allele. इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल एफ एलील की एलील फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई. अच्छा, बट टेल मी दिस, यहाँ पे स्मॉल एफ इज द ओनली एलील, राइट, जो प्रेजेंट है, क्योंकि फॉर बोथ केसेस द जीन द फिनोटाइप इज ब्लैक. क्या हम ये कह सकते हैं कि जीन पूल यहाँ पे छोटा हो गया कंपेयर टू दिस बिगर पार्ट? Yeah. एंड अगर जीन पूल डिक्रीज कर जाता है, व्हाट हैपेंस टू द जेनेटिक या phenotypic वेरिएशन? The phenotypic variation also decreases because there are less number of combinations left. बिल्कुल सही, परफेक्ट. देयर आर लेसर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस लेफ्ट. अगर दो ही ब्लैक वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, दे विल ब्रीड टुगेदर एंड चांसेस आर कि ब्लैक ही प्रोड्यूस होगा अनलेस एंड अनटिल कोई म्यूटेशन ना हो जाए. phenotypic वेरिएशन बहुत ज्यादा कम हो गई है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू एंड री ऑफस्प्रिंग्स कम हो जाएगी विद न्यू एंड न्यू phenotypes. फॉर एग्जांपल, अब इस बड़े आइलैंड में द ब्लैक वन कैन मेट विद द ब्लू वन, the red one can mate with the purple one, with the blue with the purple, the black with the red. बहुत सारी possibilities हैं. There is random mating. There is no random mating when we talk about founder effect. So यहाँ पे I'll just write down
कि बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक जो एलील की फ्रीक्वेंसी थी इन द स्मॉलर एरिया, this allele frequency in the smaller area drastically changes. And again, the earthquake which we talked about, हमने वो earthquake cause नहीं किया था. It was not an artificial process. The earthquake was due to chance. इसलिए artificially नहीं हुआ. Naturally allele frequency change हुई due to chance. And ये जो अभी अभी आखिर में हमने बात की कि founder effect results in the gene pool decreasing, which means कि अब genetic and phenotypic variation भी decrease होगा. So if you have to remember founder effect एक sentence में, एक line में, तो founder effect simply is the separating of the organisms from a bigger set of organisms into a place जहाँ पे कोई भी inhabit नहीं कर रहा. So it's simply कुछ organisms separate हो जाते हैं, and जब वो separate हो जाते हैं, जब उस नई जगह में जाते हैं, तो वो उस नई जगह के founders होते हैं. Hence the name founder effect. क्या ये चीज clear हुई? Any confusion? No, it's clear. Okay. Up, let's talk about this number two, bottleneck effect. Bottleneck effect क्या होता है? Could you explain briefly if you know what this means? Bottleneck effect? या if you could say कि ये different कैसे है founder effect से? Like basically, it's when the population size it decreases by I think approximately 50%, and again it can be Mhm. because of natural causes, and just like the founder effect, there's less genetic variation. हम्म, सही. एंड लेस फिनोटाइपिक वेरिएशन, बिल्कुल सही, क्योंकि जीन पूल जो है वो कम हो जाता है. एंड यू आर राइट. द ओनली मेन डिफरेंस जो है फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट में, फाउंडर इफेक्ट में हमें विजिबली दिख रहा था कि ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे थे, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स उठ के दूसरी जगह पे चले गए. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स सेपरेट हो गए फ्रॉम द पूल ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच वी हैड. जैसे कि यहाँ पे these two organisms which were black in color were separated from this pool of organisms. So you are separating a small population from a larger one, and this is founder effect. Bottleneck effect में कोई separation नहीं होती है. You have this pool of organisms. इन्हीं pool of organisms में एक ड्रास्टिक रिडक्शन आता है पॉपुलेशन में. नाउ यू कैन यूज बाय एटलीस्ट 50% वाला नंबर, बट ड्रास्टिक का वर्ड भी चल जाता है. देयर इज नो प्रॉब्लम इन राइटिंग दैट. सो ड्रास्टिक रिडक्शन या एटलीस्ट 50% रिड्यूस होती है पॉपुलेशन. दिस रिडक्शन is a random process. It randomly occurs. अब randomly कैसे? Let's suppose earthquake आ गया, and earthquake की वजह से many organisms die, या कोई volcanic eruption हो जाती है, many organisms die because of that. कोई भी natural disaster या कुछ भी random process की वजह से population का बहुत ज्यादा decrease करना is something which we call bottleneck effect. And इसकी वजह से allele frequency में changes भी random होते हैं, right? So for example, if there is a volcanic eruption, is the volcano का lava going to choose कि कौन सा organism is gonna die off? Or it's a No. random it's a random process. कभी black organism मर जाएगा, कभी blue organism will die off, कभी the purple one, कभी the red one. We cannot confirm this theory. कोई भी organism किसी भी वक्त die off कर जाएगा if there is a natural disaster. So let me write this down here. Bottleneck effect का मतलब a drastic reduction in the population, and this reduction जो होती है is a random process. Example, natural disasters. Hunting is not a natural disaster या natural process. This is an artificial process. The humans or the hunters choose करें कि कौन से organisms को मारना है and कौन से organisms को जिंदा रहने देना है. This is not a random process. This is not bottleneck effect. Natural disasters, on the other hand, are a random, or you could say a natural process. And this leads to
A change in the allele frequency that is obviously also a random change. चेंज के लिए मैं सिर्फ डेल्टा का साइन यूज कर रहा हूँ बिकॉज इट मेक्स इट इजियर. अच्छा, इस सब के रिजल्ट में क्या होता है? बॉटलनेक इफेक्ट के रिजल्ट में हम ये कहते हैं कि जीन पूल अब छोटा हो गया. ऑब्वियसली अगर नेचुरल डिजास्टर की वजह से ऑर्गेनिजम्स आर डाइंग ऑफ, तो फिर जीन पूल भी कम होगा. जेनेटिक एंड फिनोटाइपिक वेरिएशन एज यू सेड, ये भी कम हो जाएगी. अच्छा, अब एक बड़ा जरूरी पॉइंट है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे. द ओनली मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स वाज के इन ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग कलर थे. लेट्स अज्यूम कि कोई नेचुरल डिजास्टर होता है या एनीथिंग अकर्स which favors मतलब any change in the environment occurs which favors a particular phenotype and disfavors another phenotype. Let's say hunting हो जाती है. So now it's no longer a natural process. This is a normal artificial selection. या you could say कि predation हो जाती है by a lion or a fox. So natural selection का process हो रहा है. अब यहाँ पे हमें पता चला कि जब प्रिडेशन का प्रोसेस होता है, रेड ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव ग्रेटर एंड द ब्लैक आल्सो सर्वाइव ग्रेटर कंपेयर टू द ब्लू एंड द पर्पल वंस. ये हमें पता चला. बट टेल मी दिस, अगर बॉटलनेक इफेक्ट में नेचुरल डिजास्टर होता है एंड उसके रिजल्ट में बहुत सारे रेड और ब्लैक ऑर्गेनिजम्स डाई ऑफ कर जाते हैं, is this set of organisms now more adapted to changing environment या less adapted to changing environment? More adapted to the change in environment? तो जो रेड एंड ब्लैक ऑर्गेनिजम्स थे, दी वर द ओनली वंस राइट जो प्रेडेशन से सेफ थे, जो प्रेडेशन से बच रहे थे प्रेडेटर से. अगर यही ऑलरेडी डाई ऑफ कर गए, तो आर एनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स नाउ गोइंग टू बी सेफ फ्रॉम द प्रेडेटर्स, द ब्लू वंस और द पर्पल वंस? No. सो लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस. पहले, बॉटल नेक इफेक्ट से पहले हमने एक थ्योरी अपनी टेस्ट की. यहाँ पे इस आइलैंड में हमने एक लायन को छोड़ दिया, एक प्रेडेटर को छोड़ दिया. टर्न्स आउट कि ये प्रेडेटर ब्लू वाले ऑर्गेनिजम्स और पर्पल वाले ऑर्गेनिजम्स को प्रे करता है, एंड ब्लैक वाले ऑर्गेनिजम्स एंड द रेड वाले ऑर्गेनिजम्स आर सेफ. मतलब सिलेक्शन प्रेशर इन दोनों फिनोटाइप्स को फेवर करता है एंड इन दोनों फिनोटाइप्स को डिसफेवर करता है. यहाँ तक क्लियर? Yeah, it's clear. अच्छा, फिर क्या हुआ? बॉटलनेक इफेक्ट का प्रोसेस हुआ. एक रैंडम चेंज आया एलील फ्रीक्वेंसी में, जिसमें पॉपुलेशन ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई. एक वॉल्केनिक इरप्शन हो गया. एंड ड्यू टू चांस, ड्यू टू अ रैंडम प्रोसेस, हमें ये रिजल्ट मिला. बहुत सारे ब्लैक एंड रेड ऑर्गेनिजम्स डाई ऑफ कर गए. ओनली अ फ्यू आर लेफ्ट, एंड मेजॉरिटी में अब ब्लू एंड पर्पल ऑर्गेनिजम्स आर लेफ्ट. अब इस बॉटलनेक इफेक्ट के बाद हम फिर से एक लायन को या एक प्रेडेटर को यहाँ पे छोड़ते हैं. इज दिस सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो भी करंट सेट है, इज दिस गोना बी सेफ फ्रॉम द प्रेडेटर? No. जो ऑर्गेनिजम्स प्रेडेटर से सेफ थे, वो तो अब जिंदा ही नहीं है. दे हैड डाइड ऑफ ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द वोल्केनिक eruption. सो कैन वी से कि अब दिस सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज लेस अडेप्टेड टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट? क्योंकि अगर तो वो मोर अडेप्टेड होता तो वो बच जाता, जैसे कि ये है, राइट? Yeah. तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब जेनेटिक एंड फिनोटाइपिक वेरिएशन कम हो जाती है, सो यू आर लेस अडेप्टेड टू चेंजिंग एनवायरनमेंट. क्योंकि व्हाई इज दैट? अगर हम बॉटलनेक इफेक्ट से जरा पहले देखते, हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जिनको सिलेक्शन प्रेशर फेवर कर रहा था, कुछ थे जिनको डिसफेवर कर रहा था, जिनके अगेंस्ट जा रहा था. बॉटलनेक इफेक्ट के बाद अब सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स बच गए जिनको डिसफेवर किया जा रहा है. सो ऑब्वियसली अगर एनवायरनमेंट या कंडीशन चेंज होती है, दे आर नॉट गोना बी बेटर सूटेड टू फेस दैट और टू प्रोसेस दैट. दे गोना बी लेस सूटेड या लेस अडेप्टेड. So that's all for founder effect and bottleneck effect. Any confusion यहाँ तक? No, it's clear.
अच्छा, अब एक और टॉपिक हमारे पास बचा है, द हार्डी वाइनबर्ग इक्वेशन, विच वी गोना डू अलोंग विद ऑल ऑफ द अदर स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स। एंड उसके बाद स्पीशीज एंड स्पीसिएशन का टॉपिक है, विच विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं एक क्वेश्चन निकालता हूँ। आई रिमेंबर व्हाट पेपर दैट वाज फ्रॉम, एंड दैट वाज related to the topic which we did today. So just give me 1 second. It's a really, really good question. All right, if I can just find this. Okay, let's solve this entire question. एक second. It's all about inheritance, genetics, natural selection, selection evolution, वगैरह वगैरह. So, okay, this is May June 2025, paper 41. Is the screen visible? No, it's not. बस एक second में. Yeah, now. Oh, yeah, it's visible now. Yeah, I just go to that question. ये वाला. So I want you to read the question and then try to answer this. Sir, so like, could it be that the like
the disease, it's caused by a Mhm. dominant allele. Dominant allele, bilkul, that's a good conclusion. And what is the evidence for that? Because basically the affected mother, the affected mother one, she basically can have the unaffected children, like which is like the 4 and 6, uh, and Okay. and then basically that shows that she might be heterozygous, and like uh if the disease was like recessive, then she would have passed the disease on. No, wait. Yeah, you're right. अगर allele जो है वो recessive होता तो फिर the daughter would not be able to have that disease, right? Yeah, yeah. लेकिन the daughter is having the disease यहाँ पे. So meaning that the allele is not recessive, the allele is dominant. Correct. So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. If the allele was recessive, which is going against our conclusion, तो मतलब उस experiment में कुछ ऐसा होना चाहिए, and that's something which we're looking for is that we need to have a circle which is transparent. मतलब कोई, for example, like this. But we do have another one opposite to this, which is showing us that the daughter has the disease, and that can't be possible if the allele or unless and until the allele is dominant, which is our conclusion. So if the allele was recessive, the daughter would not have the disease, but obviously she does. Acha, more importantly, let's go to part B of this question, and this is the more important part. So the question says that varicata porphyria, which is the disease, it has 1 in 100,000 people in Europe. ये occur करता है ये condition in 1 in approximately 100,000 people in Europe. Now 1600s में approximately 100 Dutch people migrated from Europe to South Africa. तो पहले वो 100 यूरोप में थे, यूरोप से वो साउथ अफ्रीका में चले गए. The population of the people of Dutch descent in South Africa is now 2.5 million. मतलब कि पहले यूरोप में थे, अब साउथ अफ्रीका में गए. जो ऑर्गेनिजम्स इन 100 लोगों की वजह से प्रोड्यूस हुए उनको कहते हैं डच डिसेंट. सो अब इन डच डिसेंट की पॉपुलेशन इन साउथ अफ्रीका इज 2.5 मिलियन, एंड दिस कंडीशन occurs now in 1 in 1,000 people in this population of Dutch descent. If you compare this to the population in Europe, तो 1 in 100,000 थी. So suggest and explain. So मतलब give a conclusion कि क्यों हुआ and then कैसे हुआ. Why this condition is more common in the Dutch descent वाले लोग compared to the people जो यूरोप में थे.
Yeah, so basically it could be because of like the founder effect because like when Hmm. they migrated so when they migrated like basically they might carry the allele for the disease and basically when they're like mm, yeah, so basically, if they Correct. like carry this disease and like this disease can be passed on because this disease can be passed on to their offspring and basically since due to the founder effect there's basically less like it's there's a higher chance of the carriers mating with each other and then basically there's less genetic variation and less mixing with the other populations so that's why this So, allele hmm, is like passed on. बिल्कुल। कैन वी से कि अब जब छोटी पॉपुलेशन है, दिस इज द 100 पीपल, तो ये छोटी पॉपुलेशन में जो जेनेटिक ड्रिफ्ट था, जो फाउंडर इफेक्ट था, उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट था। Yeah. So that's one point as well, apart from the other points which you said, जो कि बिल्कुल सही है. So one mark simply in 3 marks में से just for writing founder effect. That's one mark right there. So founder effect की वजह से क्या होता है? That's the second mark. And then the third mark, genetic drift, and the one which you said कि अब क्योंकि जब कम लोग हैं, तो there is a greater chance of the carriers possessing that condition mating together. So though the set of chromosomes or the set of alleles passed downwards could be that allele जिसमें वो condition express होती है. एंड दैट मीन्स कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों में वो कंडीशन दिखेगी एंड इसीलिए फ्रॉम 1 in 100,000 वी रीच टू 1 in 1,000. तो जेनेटिक पूल तो कम हुआ, जेनेटिक वेरिएशन कम हुई, लेकिन इस जेनेटिक वेरिएशन कम होने की वजह से हमें नुकसान हुआ. डज दैट मेक सेंस? Yeah. राइट. सो अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल ऑफ द पॉइंट्स वर बिल्कुल सही. सो दैट्स 3 out of 3. सही. अच्छा, this is micro arrays. This is chapter 19. So we'll do this later on. That is the end of this question. क्योंकि all of this is from chapter 19. Okay, so yeah, that would be it for today. In the next class, हम करेंगे the speciation, allopatric and sympatric, and that would be end for chapter 17. फिर chapter 18 हम शुरू करेंगे, and once we're done with that, फिर P5 हम side by side शुरू कर देंगे. All right, so that would be it. Thank you. Laughers. Sir, could I ask two Yeah. questions about the respiration chapter? Because I have my mock on like Tuesday. I just wanted to ask some things. Sorry, I didn't get you. What do you want? Uh, The b- inspiration say? Basically, there's would like two questions I wanted to ask about the respiration chapter because Yeah, I have a sure, mock sure. on Tuesday. Yeah. Firstly, I wanted to ask if for like the questions in respiration, if we like basically write ETCs instead of the whole electron transport chain, is it fine Mhm. or will our mark be deducted? नहीं, that's fine, perfectly fine. Acceptable acronym है, वो use कर सकते हैं exam में. Uh-huh, okay. So we don't have to mention it like once before, like the full form, like before, like, using the acronym. नहीं, क्योंकि मार्किंग स्कीम में भी वो ईटीसी ही लिखते हैं एंड ईटीसी का कोई और मतलब नहीं है. दैट्स व्हाट इट मींस के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. एंड इफ यू लुक एट द मार्किंग स्कीम्स, उसमें भी दे डोंट राइट द होल थिंग, दे जस्ट राइट ईटीसी. सो दैट्स फाइन. Yeah, okay. Also, there was this one question I was doing. या. So basically, it basically said that the outer membrane of the mitochondria, it bursts when we put it in like pure water, and the inner membrane, it remains intact. And I didn't really understand that question. So could you like explain it? Like, why does the inner mitochondrial membrane remain intact in pure water? Like, why doesn't it burst like So I natural? would have to look at the entire question इसको समझने के लिए, but from what I understand, what you told me until now, कि this is not a respiration का question, this is a diffusion का question. Sorry, osmosis का question. This is chapter 4 AS में, कि जो endosmosis का process होता है, मतलब कि जब pure water moves into the cell, के for example the mitochondria, the organelle that you have, you place that into a solution of pure water. So किसका ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा, द प्योर वाटर और द माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर? The pure water. The pure water. So the pure water or the outer part is a greater water potential, and inside of the mitochondria,
that has a lower water potential. So high to low water potential, water moves in, and that obviously means कि mitochondria swell होगा, expand होगा. Basically जो basic endosmosis का process है, and the mitochondrial wall is going to expand and then eventually burst. There has to be some hint in the question जो कि ये पूछ रहा होगा या ये बता रहा होगा as to why inner वाला part is not bursting and the outer wall is. But then the question which you told me, it's basically the both of them which should burst. But unless and until I just look at the whole question, I won't be able to understand. So if just send a picture of that question and then I'll be able to explain it on WhatsApp. Yeah, okay, I'll send it. Thank you. Right. Okay. Anything else? No, no, thank you. That's it. All right. Perfect. Okay, Thank you, thank you. Allah Allah Hafiz. Hafiz.